This is our 18th lecture. Now we are going to share screen for this lecture. So for yesterday we have done two types of policies to stabilize the economy by the government. First policy is the fiscal policy, second policy is the monetary policy. Fiscal policy has two forms. First one is expansionary fiscal policy. Second one is contractory or tight fiscal policy. We have done. So next, yesterday I discussed expansionary monetary policy. That was also so easy. That was quite easy. So first one is expansionary monetary policy. We implement over here. That is the LM curve. First one is the IS equations, where aggregate supply equal to aggregate demand. And the second equation is the LM equations, where money supply equal to money demand. So here, as money supply increases, you can see here money supply increases, LM curve shift right. LM curve shift right. Well, LM curve shift right. आपको बेटा ऑलरेडी आइडिया होगा जब LM कर्व राइट शिफ्ट होता है, जब मनी सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट होता है, then you remember that interest rate decreases. Interest rate decreases because government increased money supply, printed money, state bank printed money, and now money is available for investment purpose at lower interest rate. अब लोकल मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया कम और इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में इंटरेस्ट रेट हो गया हायर. अब क्या होगा, डोमेस्टिक डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होगा वो फॉरेन इन्वेस्ट करेगा जाकर. फॉरेन इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वो फॉरेन करेंसी बाय करेगा. जब फॉरेन करेंसी बाय करेगा, फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है. जब फॉरेन करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, देन एक्सचेंज रेट इन द डोमेस्टिक मार्केट डिक्रीजेस. So that is here. Exchange rate decreases. As exchange rate decreases, net export increases because of export increases and import decreases. जब exchange rate बढ़ जाता है, then export बढ़ती है, import कम हो जाती है. एक्सपोर्ट के बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट आपकी बढ़ जाती है. जब नेट एक्सपोर्ट बढ़ती है, देन यू शिफ्ट from this point to this point. So as money supply increases, LM curve shift right. As a result, you are on new LM curve in the red color and IS curve in the blue color. Both are intersected at this point where new exchange rate is E2 and new income level is Y2. That is the equilibrium point in Mundell Fleming model. That is we have done.
Now the second point I will give you the assignment. Hopefully you will find the assignment very soon. That is the tight monetary policy, a decrease in money supply. That is the opposite case you will do by self. अच्छा, एक बात मैंने आपको शायद मुझे याद नहीं रहा, शायद बताया हो, मुझे अभी श्योर नहीं है. एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी या एक्सपेंसिव फिस्कल पॉलिसी हम क्यों फॉलो करते हैं? When economy of any country is in recession, when economy in any country is in recession, then their country follows expansionary fiscal or monetary policy. रिसेशन में जब इनकम लेवल लोगों का बहुत कम हो जाता है, देन कौन सी पॉलिसी फॉलो करते हैं? एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इन केस ऑफ रिसेशन. बट इन केस ऑफ एक्सपेंशन की इकोनॉमी में बहुत एक्सपेंशन आ गया है, बूम आ गया इकोनॉमी में, हायर इनकम लेवल है, हायर इनकम लेवल का इफेक्ट इन्फ्लेशन की सूरत में निकलता है, वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं. तो इन केस ऑफ हायर एक्सपेंशन और boom in any economy, contractionary monetary or fiscal policy is the suitable choice to stabilize the economy. That is point very important. जब आपसे भी पूछे कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम क्यों फॉलो करते हैं, आप कहेंगे इन केस ऑफ रिसेशन. Okay, now I'm going to next slide. That is the point that already you have done here. But a second point, that is the comparison. The first lesson from monetary policy, from expansionary monetary policy. Monetary policy affect output by affecting the components of aggregate demand. Fiscal policy does not affect output, does not affect output. That is we have done in case of closed economy, in case of small open economy. Fiscal policy does not affect outputs due to crowding out effects. Now, in case of closed economy, when there is no net export, no import in the economy, just government expenditure तक आपकी IS equation है. Then income is a function of interest rates in LM curve, in IS curve. As money supply increases, the first step is real exchange rate decreases. As a result, investment increases. Ultimately, investment is a component of income. As investment increases, in IS equation, your output increases. That is the point. So money supply increases, shift LM curve, right, and finally it increases output level. Now in small open economy, we find export and import. We find exports and imports.
in small open economy, where as money supply increases, LM curve shift right. One another reason is that जब money supply economy में बढ़ जाएगी, then you can see that more money, less power. Domestic reserve के against money supply बढ़ जाएगी, then करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी. Exchange rate decreases when exchange and LM curve shift right. Exchange rate decreases. As exchange rate decreases, net export that is equal to export minus import. Net export increases, which push outputs to go up. So, monetary policy affect output level. Okay. The second one is the point is that expansion monetary policy does not increase world aggregate demand. Does not increase world aggregate demand. It just shifts demand from foreign to domestic products. It just shifts the demand from foreign to domestic products. वर्ल्ड डिमांड को नहीं बढ़ाती, वर्ल्ड प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ती, बल्कि एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपोर्ट बढ़ा देती है. एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब क्या है? पाकिस्तानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड फॉरेन ने बढ़ा दी है. मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिमांड फॉरेन कंट्री बढ़ा देते हैं. सो हियर जब फॉरेन कंट्रीज पाकिस्तान प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देंगे लोअर एक्सचेंज रेट की वजह से, देन हायर डोमेस्टिक इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट they are at the expense of losses abroad. They are at the expense of losses abroad. ठीक है, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाता है, लेकिन ये बढ़ना किस एक्सपेंस पे होगा? एट द एक्सपेंस ऑफ लॉस, जो पाकिस्तान को लॉसेस में ब्रॉड में लॉसेस भी होते हैं. दैट इज ओके, दैट इज नॉट एबल टू डिस्कस नाउ बिकॉज जस्ट one key result you can do by self. You just do belong. That is important point. That is okay. Now, the next thing is trade under floating exchange rates. That is very interesting. Trade policy under floating exchange rates. For example, trade policies, beta. Trade policies by the domestic country affect trade level. How trade policy affects trade level, trade volume? Over a given time period, when trade policy is launched, at that time period, exchange rate is given. जब ट्रेड पॉलिसी लॉन्च की जाती है उसको एक्सचेंज रेट को नहीं डिस्टर्ब किया जाता. लेटर ऑन अगर इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाए तो एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाता है. सो हियर एट एनी एक्सचेंज रेट a tariff or quota, an import tariff or quota. Import tariff means
sometimes governments follow protection policy. Protection policy for its own products. Sometimes any economy protects its own products by following import tariff or import quota. For example, पाकिस्तान राइस प्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ इंडिया के जो राइस है वो सभी को पता है वो बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के भी अच्छे हैं, लेकिन इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या करेंगे, जस्ट इंजॉय करने के लिए इंडियन चावल इंपोर्ट करेंगे। अब पाकिस्तान डेफिनेटली जब इंपोर्ट करेगा तो पेमेंट किसको जाएंगी, इंडिया को जाएंगी। अब उस पेमेंट को रोकने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, इंपोर्ट पे बैन तो लगा नहीं सकती, लेकिन इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, फॉलो टैरिफ पॉलिसी, कोटा पॉलिसी टू प्रोटेक्ट इट्स ओन प्रोडक्ट। अपनी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट कोटा या इंपोर्ट टैरिफ पॉलिसी लगाएगी। इंपोर्ट टैरिफ मीन taxes on imports will be increased to protect its own products. अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट टैरिफ लगा देगी। इंपोर्ट टैरिफ मीन ए टैक्स ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। जब इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगेगा, व्हेन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट विल गो अप। फॉर एग्जांपल, द एक्चुअल प्राइस ऑफ राइस इज 100 rupees and import quota is its 50%, price of its 50%, then what will be happen? 150% of 100 rupees is 50 rupees. Now, after import quota, the price will be 150 rupees. 150 rupees price होगी आफ्टर quota. अब पाकिस्तान में राइस की प्राइस क्या है, 100 rupees. Then many people will reduce the demand for Indian rice due to import tariff. Second one is government can follow import quota policy to protect its products. That is protectionary policy. That is protectionary policy. Now, what is import quota? Government define the quota for imports. Government define the quota for imports. Now, importers cannot import more than this amount of quota. अब गवर्नमेंट एक कोटा डिफाइन कर देती है, लाइक ओनली 1 टन राइस आप इंपोर्ट कर सकते हैं। 1 टन राइस से एक चावल भी आप इंपोर्ट नहीं करेंगे। जब गवर्नमेंट इंपोर्ट कोटा लगा देगी, देन इंडियन राइस कम आएगा। व्हेन इंडियन राइस विल बी लोअर इन क्वालिटी, जब वो क्वालिटी में कम आएगा, देन प्राइस लेवल विल गो अप। As a result, in both cases, in case of import tariff or import quota, at any given level of exchange rate, an import quota or tariff reduces import. That is, we have done. चाहे import quota हो, चाहे import tariff हो, both reduces imports. When imports are reduced, come on here, net export is equation, export minus import, export minus import. When imports increases, when import decreases due to import tariff or import quota, then net export will go up. जब इंपोर्ट नेगेटिव पार्ट कम हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट का,
एक्सपोर्ट पॉजिटिव पार्ट है, इम्पोर्ट नेगेटिव पार्ट है। जब नेगेटिव पार्ट जो है वो कम हो जाएगा, द नेट एक्सपोर्ट विल इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट जब नेट एक्सपोर्ट बढ़ेगी देन बड़ा आईएस कर्व शिफ्ट अप बिकॉज these components causes IS curve to shift upward. Net export, government expenditure, consumption, and investment. Now IS curve shift upward, and you are here at this point. You can see the concern. Now you can see that output level increase. You can see that output level has been increased. But the interesting point is that that is not equilibrium point. That is not equilibrium, new equilibrium point. New equilibrium point, when IS curve shift upwards, you are on here at new equilibrium point where LM curve will cross to IS curve, red color IS curve at new exchange rate, where new equilibrium rate at new equilibrium point exchange rate increases, but no change in income level. But the problem is that, listen please very carefully, at given exchange rate, when net export increases, you are here at this point where income level increase. जब income level बढ़ेगा बेटा, very clear, you will demand more income. When your income level increase, demand for money increase. इनकम के बढ़ने से मनी डिमांड फौरन बढ़ जाती है बेटा। व्हेन योर इनकम लेवल इंक्रीज, घर वाले आपको 100 से 200 रुपी आपको जस्ट पॉकेट मनी दे, then it means that your purchasing power increase, you demand more money from your homes. Now, as money demand increases, then this thing you can see in the LM curve framework. This is not here. Then interest rate, local interest rate goes up for short run. In the short run, local interest rate is greater than the global interest rate. Now, foreign investor will invest in local countries, in local economy. When a foreign investor will invest in local economy, then demand for local currency increases. Local currency appreciates. When local currency appreciates, it means exchange rate have been increased. From this point, now we move from this point to this point. This appreciation causes lower exports and more imports. As a result, net export जो पहले बड़ी थी अब वो कम हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जब नेट एक्सपोर्ट कम होगी, आउटपुट लेवल दोबारा फिर उसी पॉइंट Y1 पे चला जाएगा। Now you are at this point, not at this point. Now higher exchange rate, appreciated exchange rate crowds out net export. When it crowds out net export, we move back to Y1 again, and now we are at new equilibrium point at this point. At this level of equilibrium, you have new equilibrium exchange rate E2 and equilibrium income level is Y1 in the Mendel-Fleming model, where red color IS curve intersects to the LM curve. That is the new equilibrium point. So hopefully you have done everything. This is so easy. We will proceed further. Now I am going to close our lecture. अगर आपको बेटा कोई क्वेश्चन हो आप इजीली पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं हर तरह से। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछें, एंजॉय करें, मुझे जरूर बताइएगा। Now I am going to close the lecture. Okay.